Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a new topic in PowerPoint, that is how to make action button and how to apply hyperlink on that action button. So first we need to understand that what is hyperlink. Hyperlink is a link. Once you click on that link, you will navigate to different pages or different applications. Okay, so first we will learn how to make a button, how to make an active button or action button, you can say. Fine. So this is my PowerPoint presentation application. So I'm going to open a blank slide. I have taken a blank slide. In that blank slide I want a button. I want to insert a action button. ठीक है, एक एक्शन बटन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई अदर एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई यूआरएल भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ यू वांट टू मेक अ बटन or active button, once you clicked on that active button you will navigate to different files. ठीक है, different file. It may be a music file, it may be a video file, it may be audio, video, any kind of application you can open, any kind of URL you can open. Okay, so first this is a menu bar, home, insert, design. Okay, so first go to the insert tab. Here click on insert tab. In insert tab there is a illustration group, illustration. ठीक है, in which you have to go shapes option. ठीक है, click on it, that is drop down button. At the end you can see here action button. There are lots of action buttons are there, so you can choose any one of them. I'm going to choose this one. Fine. Now this button is created. Fine. Once you created this button, this window will pop up, the action window, because you want now, once you clicked on that button, where you want to go, that is the hyperlink, which application you want to open and what kind of action you want to perform by clicking on it. So there are two options actually, mouse click and mouse over. ठीक है, mouse over means once you जब आप उस माउस को उस बटन पे कर्सर को ऐसे ओवर करेंगे, ओवर मतलब होता है मंडराना, ठीक है, मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट एप्लीकेशन दैट यू हैड लिंक्ड दिस बटन, that will be open. As simple as that. And click means once you click that button, that particular destination application or any kind of file will be open. Fine. So we will see first mouse click. So mouse click, there is an option hyperlink to. After clicking you want to open which kind of application. Fine. So I'm going to give URL of my YouTube channel. So I'm going to write http www.youtube.com/additive-free. Fine. So this is my YouTube channel, additive-free. Click on OK button. And there is also play sound option. Play sound means अगर आप कोई प्ले साउंड बटन का एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नॉइज आएगी. ठीक है, क्लिक की नॉइज आएगी, या फिर कुछ भी आप नॉइज क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट नॉइज ऑप्शंस हैं, साउंड ऑप्शंस हैं, आप कह सकते हैं. ठीक है, नॉइज मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो क्लिक के ऑप्शन आएगा. जैसे यहाँ पर क्लिक है, मैं चूज किया क्लिक. जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके एक छोटा सा साउंड आएगा, सिंपल सा. ठीक है, सो इसको आप ओके कर दीजिए. फाइन. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस बटन ऑल्सो. ठीक है, हाउ? देयर आर लॉट्स ऑफ बाय डिफॉल्ट थीम्स आर देयर, theme styles. You can choose any one of them. I'm going to choose this one. I think this is lucrative. Fine. And there is a shape fill option is there. आप internal color भी change कर सकते हैं according to your need. ठीक है, I selected this one. और इस बटन को resize भी कर सकते हैं according to your need. आप ऐसे कर लीजिए, ये छोटा भी हो जाएगा. मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. मैंने एक छोटा सा बटन मेक कर लिया. ठीक है, फाइन. यू कैन चेंज द इफेक्ट ऑल्सो. आई एम गोइंग टू गिव शैडो इफेक्ट. इन शैडो में आउटर इफेक्ट आई वांट टू गिव. ठीक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर क्रिएटिंग द बटन, आई हैव क्रिएटेड अ बटन ऑल्सो, आई हैव अप्लाइड द हाइपरलिंक ऑल्सो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्लाइड शो. क्लिक ऑन स्लाइड शो ऑप्शन फ्रॉम करंट स्लाइड. ठीक है. नाउ once you clicked on this button, that particular URL that I have given in hyperlink, that will be open. ठीक है, let's see. I'm going to click on it. Yes, it is opening now. Yeah, you can see here www.youtube.com
slash add to free. My web page is open. Why? Because I have given the link. Fine. This is my web page. I'm going to cross it, escape button. Fine. Now, after creating hyperlink, if you want to edit the destination path, suppose that by mistake you have given wrong URL. So if you want to change it, you can change. Don't be panic. Just right click on it. There is an option edit hyperlink. Click on it. After that, you can choose. Lots of options are there. You can choose any one of them. If you want to move directly to the next slide or previous slide, you can choose any one of these option. Okay, you can choose other files also. I'm giving other file. Okay, suppose that I want to open, there are lots of files are there. I want to open this file, types of software. It is written here something. I'm just going to click on it. Okay, after that, after selecting this file, click on OK button, and I'm going to choose again click option. Okay, now from the current slide. ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर एक क्लिक का साउंड आएगा. लिसन वेरी केयरफुली. आया आवाज, छोटा सा क्लिक का ऑप्शन आया है, बहुत लिटिल बिट. ठीक है, बहुत धीरे से आया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक बार मैं फिर से क्लिक कर देता हूं. ठीक, फाइन. नाउ दिस विंडो विल बी पॉप अप. इट इज आस्किंग अबाउट द फाइल URL. You want to open it or not? ठीक है, see inside the user, inside the Shashank Gupta, inside the document, in types you want to open types of software .docx, that word file you want to open. Yes, I want to open it. Click on yes button. Then what will happen? This file is opened. Clear? I made this file previously, so I want to open that file by using hyperlink button. ठीक है, fine. I hope ये आपको clear हो गया होगा. ठीक है, so in this video we had seen that how to apply हाइपरलिंक ऑन ए पर्टिकुलर एक्शन बटन. ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग. अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज डिस्कस टू मी. एंड तब तक के लिए गुड डे टू ऑल. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग. जय माता की.